Okay, dear students, good evening. Today, are you prepared for the topic First World War? This is a very important topic, and you have to cover this topic today, but very clear and lucid topic. My students, as I have told you earlier, tomorrow I will send you the next one study material and you will enter into the part 4th. Part 4th means world between the two world wars. मतलब कि अभी आप पार्ट 3rd के लास्ट सब टॉपिक में हो, जो आज आपका हो जाएगा वो टॉपिक होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. कल आपको मैं स्टडी मटेरियल सेंड करूंगा, वो होगा पार्ट 4th का पहला सब टॉपिक. दैट इज व्हाट पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, यानी आफ्टर इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो पहले, चूंकि एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि एज टुडे यू आर गोइंग टू फिनिश द पार्ट 3rd. And part 3rd consists of 4 subtopics, So all the 4 subtopics are having some sort of internal relations with each other, or all the 4 topics are internally cohesive. They are just integrated with each other. So yesterday I have given to you a diagram. Once again I am reminding the diagram. Part 2, part 3rd combined together creates the situation of First World War. In what way? So just follow my diagram. अब suppose you can say part 2 and part 3rd. अब here you can say part 2 means here the French Revolution, and French Revolution give birth to nationalism, So nationalism sorts of result, two sorts of result. One is the process of unification, or here you can say the constructive impact on the divided regions of Europe, that is called the integrative impact and integration of Italy and Germany, or unification of Italy and Germany. Of Italy and Germany. And second one is incipient nationalism in Balkan region. In Balkan region. My students, here the point is incipient nationalism is just the beginning of nationalism. You can say in fact a growing sense of or prevailing sense of nationalism among different linguistic and racial minorities group. So different racial and linguistic minority groups you can still recall in Balkan region under Ottoman Empire and Habsburg Empire, So that is the second one, impact of nationalism. Now here you have to observe. You can very well observe here as the result of this one is challenge to balance of power in Europe. Challenge to balance of power in Europe. And then the second one factor here you have to observe, that is supranationalism
सुप्रानेशनलिज्म और सुप्रानेशनलिज्म और imperialism, आई एम मेकिंग क्रिस्टल क्लियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मतलब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि पार्ट 2 और पार्ट 3 से जो आप कवर कर रहे हो, आप आ रहे हो ग्रेजुअली, यू नो, ये सारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कल्मिनेट करेगा और ये बहुत इजीली आप समझ जाओगे। देखो, आप हमें बताना, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, नेशनलिज्म फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकला, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, लेकिन यहां डिवाइसिव इंपैक्ट है बाल्कन रीजन में, यू नो, कि दैट इज इंसिपिएंट नेशनलिज्म, मींस की इंपैक्ट ऑफ नेशनलिज्म ऑन डिफरेंट रेशियल एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स, यू नो, सो दैट विल रिजल्ट इनटू हियर यू कैन से बाल्कन क्राइसिस। दिस इज बाल्कन क्राइसिस, जिसको बाल्कन संकट बोलते हो। तो ये यहां आ गया। Here you have to observe. Is any problem? Yeah? Yes. Whenever you observe here challenge to balance of power in Europe. So, up now you can say as the result of nationalism was unification of Italy and Germany. So, after the success of Italian and German nationalists, even nationalists all over Europe were encouraged further. मतलब जो यूरोप के बाकी जो नेशनलिस्ट थे वो और भी बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक हो गए कि भाई नेशन का कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा नेशनलिज्म इंपैक्ट करने लगा। तो उसी का रिजल्ट क्या हुआ, दैट इज, एक तो यूनिफिकेशन ने चैलेंज किया बैलेंस ऑफ पावर को। जर्मनी इज एक्चुअली क्रिएटेड अ बिग imbalance in the existing balance of power in Europe. Second one, कि this unification of Germany and Italy inspired nationalism in Europe so and so कि it took the form of supranationalism. In Hindi, अति राष्ट्रवाद का रूप ले लिया. And supranationalism is imperialism. Here the incipient nationalism in Balkan region, that is the Balkan crisis. Part 2. Let me move here and just observe Industrial Revolution. Industrial Revolution. Search for market. Search for market, you know. Search for market. So search for market will lead to where? That is imperialism. It results into imperialism means कि imperialist expansion, कि बड़े से बड़े बाजार पर कब्जा करना है. That is the point here. Second one you can say the impact of this search for market imperialism and rise of proletariat class. The rise of proletariat class results into what, you know? So that result into ultra socialism और मार्क्सिज्म मतलब देखो, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक इंपैक्ट हुआ सर्च फॉर मार्केट, यू नो. तो सर्च फॉर मार्केट है, उसे राइज ऑफ प्रोलेटेरिएट क्लास होगा, अल्ट्रा नेशनलिज्म होगा. और दूसरा इसका इंपैक्ट है स्ट्रेंथेनिंग ऑफ द मिडिल क्लास. स्ट्रेंथेनिंग ऑफ द मिडिल क्लास. स्ट्रेंथेनिंग ऑफ द मिडिल क्लास होगा, उसका होगा आइडियोलॉजी नेशनलिज्म, प्रोग्रेस ऑफ नेशनलिज्म. देखिए,
आप यह जान लीजिए, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत करना। जैसे मैंने कहा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आपको याद है जब कमर्शियल रेवोल्यूशन हुआ तो मिडिल क्लास इमर्ज किया था, याद होगा। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो मिडिल क्लास पहले से और भी ज्यादा स्ट्रांग होकर उभरा। लेकिन अब मिडिल क्लास को एक चैलेंज मिल गया, किसके रूप में? इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास के रूप में, प्रोलेटेरिएट क्लास के रूप में। तो प्रोलेटेरिएट क्लास का राइज ने मार्क्सिज्म को जन्म दिया, और इधर जो स्ट्रेंथनिंग ऑफ मिडिल क्लास हुआ उसने नेशनलिज्म को मजबूत बनाया, बिकॉज नेशनलिज्म वाज अ मिडिल क्लास आइडियोलॉजी। You cannot ignore nationalism now because middle class has promoted this ideology consciously. तो इधर नेशनलिज्म भी ग्रो कर रहा है, इधर मार्क्सिज्म आ चुका है, और इधर बाल्कन क्वेश्चन आ चुका है, इधर नेशनलिज्म है, अब इंपेलिज्म है। अब यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस इंपेलिज्म एंड दिस इंपेलिज्म? नो डिफरेंस एट ऑल, नो डिफरेंस एट ऑल। इन फैक्ट द पॉइंट इज कि इन supranationalism is imperialism because whenever you are trying to assert a sense of national glory, so you have to acquire more and more colonies or expand your empire boastfully that there is no sunset in our empire. So that is the part of nationalism as well, and search for market, you are in the genuine search for market that is moving to imperialism again, क्योंकि आपको मार्केट चाहिए, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि बीच में जो राइज ऑफ मार्क्सिज्म हुआ है, तो मार्क्सिज्म इंटरनेशनलिज्म पर बल देता है, ग्लोबलिज्म पर, कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। तो ये दोनों इसका रास्ता काटने के लिए, क्योंकि अब जब मार्क्सिज्म जो वर्ल्ड रिवॉल्यूशन की बात करता है, तो एक तरफ से इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म दोनों आपस में मिलकर मार्क्सिज्म का रास्ता काटता है। नो, विल नॉट लेट मार्क्सिज्म प्रोग्रेस फर्दर। तो उसी क्रम में जो नेशनलिज्म पर बहुत ज्यादा इंफेसिस हुआ और इंपेरियलिज्म पर ज्यादा इंफेसिस हुआ, इधर बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ ही चुका था, इधर बाल्कन क्वेश्चन आ ही चुका था, ये सब के सब मिलकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जन्म दे दिया। All the questions culminate into the First World War. My students, I admit it, it is slightly complex, but I have tried to simplify it as much as possible. Are you clear or any difficulty? Please give me some hint. Please give me some hint so that I can move further. माय स्टूडेंट्स, इसको रिपीट करना मुश्किल है, क्योंकि इट इज इन फैक्ट here a number of issues are involved. Once again I am going to repeat it. It will involve at least 15 minutes, and you are having the limited time. So if you don't understand this diagram, ignore it, no problem. It is not going to directly link to the question. तो फिर आप पूछोगे why I have raised this issue, why I have, it is sheerly for the fact that I just want to make you a thinking creature. Very simple thing. आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन ने नेशनलिज्म को जन्म दिया। नेशनलिज्म ने एक तरफ इंटीग्रेशन के, नेशनलिज्म गेव बर्थ टू द मूवमेंट फॉर यूनिफिकेशन, मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं। तो इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। दूसरी तरफ वही नेशनलिज्म ने बाल्कन रीजन में माइनॉरिटी ग्रुप्स के एस्पिरेशन को इनकरेज किया, तो वहां पर डिवाइसिव पॉलिटिक्स, फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो गया, तो बाल्कन क्वेश्चन बन गया। उधर जो यूनिफिकेशन इटली और जर्मनी हुआ, तो उसने और भी नेशनलिज्म को इनकरेज किया, क्योंकि जो इटली और जर्मनी का सक्सेस है उसने यूरोपियन लोगों में और भी नेशनलिज्म की भावना भर दी। तो वहां क्या हुआ, सुपरा नेशनलिज्म आ गया। वहां सुपरा नेशनलिज्म है, वही इंपेरियलिज्म है। तो ये है। और दूसरी बात है कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी हुआ तो बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बैलेंस ऑफ पावर को रिस्टेब्लिश करने के लिए भी लड़ा गया था। इधर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो मार्केट का सर्च शुरू हो गया, तो मार्केट के सर्च ने फिर इधर भी इंपेरियलिज्म को जन्म दिया। दोनों एक ही हैं लगभग। और इधर राइज ऑफ प्रोलेटेरिएट क्लास हुआ तो मार्क्सिज्म आया। मिडिल क्लास स्ट्रेंथेंड हुआ तो नेशनलिज्म आया। अब मार्क्सिज्म जब वर्ल्ड रिवॉल्यूशन की बात कर रहा था, इट क्रिएटेड अ बिग प्रॉब्लम, बिग चैलेंज। सो इन ऑर्डर टू काउंटर मार्क्सिज्म को काउंटर करने के लिए नेशनलिज्म को और भी ज्यादा इंकरेजमेंट, जैसे मिडिल क्लास ने, जैसे वो बोलते थे वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, तो मिडिल क्लास यूज्ड टू गिव द काउंटर स्लोगन, नो वर्कर्स, यू आर ए फ्रेंच फर्स्ट, just see this French flag. Here the
French national anthem, because you are a French first, you are a British first, you are a Danish first, you are a Dutch first, so that there should not be a class consciousness among the workers all over the world. So it was in this course, you can say, nationalism was encouraged further, imperialism was encouraged further in order to counter Marxism. So it took the form of aggressive nationalism, and aggressive imperialism resulted into the First World War. Balkan question, बैलेंस ऑफ, तो मैंने ऑलमोस्ट आपको रिपीट कर दिया, आप मेरे विचार से समझ गए होगा, नहीं समझ पाए होगे इग्नोर कर दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये जस्ट मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया कि आप यू हैव टू बी ए थिंकिंग क्रिएचर, इसलिए मैंने बताया कि सभी एक दूसरे से लिंक्ड हैं। हाँ, होमवर्क। What do you mean by the term globalization? Why is this term used for 19th century world? So, in this question, have you answered this question or any difficulty? Mr. Ankur, ask my students. Have you answered the question? Yes, I have tried. Okay, very simple. Introduction, you have to draw the introduction at your own. You can start the question in this manner. कि globalization means communication, intense interaction among the different regions of the world, through the latest means of transport and communication. Through latest means of transport and communication. Latest means of transport and communication, you can say. Communication, that is the introductory line, just one. Although globalization, the term globalization is frequently used for the world order in 1990s onwards, 1990 onwards, but some sort of globalization was visible even in 19th century. Following factors worked as the tool for globalization.
अब that is clear, this point up to this point clear. अब now as the question is for 19th century, what do you mean by and why is this term used for 19th century? So then 5 to 6 points I have discussed with you. अब now we have to mention about the 5 to 6 points. अब what are the 5 to 6 points you have to mention? So you have to mention here, in fact, tools about the tools after dash you can mention the means of transport and communication, steam engine, railways, opening of Suez Canal, etc. So as of one point to mention, then you can mention further you can say the European powers used to 5 to 6 European powers were running to economy presently, running to economy. As the third factor you can mention about the gold standard, which I have just, the gold standard became a means for exchange among different countries at that time, you know. So different countries at that time. So 5 to 6 factors I have mentioned about in yesterday's class on imperialism. So the same factor you will mention here, and you will try to prove that in this way we find that in 19th century also some sort of globalization was visible. Are you clear? और एनी कंफ्यूजन? वही 5 to 6 फैक्टर्स जो आपको 19th सेंचुरी में दिखता है, जो आप ग्लोबलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हो, उसको यूज कर लीजिए. जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड है, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लाइंस है, द यू कैन से imperialist expansion of the 5 to 6 European powers, and the European powers are running the economy of that time. तो ये some sort of globalization माना जाता है. Anyway, my point is, what? Continue. Now we are coming to the First World War. First World War. My students, at the First World War, first of all, we have to mention about the causes or background. So first of all, we have to mention political factor. In my study material, you will find political factor. Today, Mr. Ankur, I have just provided the study material yesterday to them. So they are already having their study material. And you people might have gone through my study material. Even after attending the class, once again you have to make the revision. You will be crystal clear. Political factor, then economic factor, then social factor, then political factor, economic factor, social factor, cultural factor, and diplomatic factor. 1, 2, 3, 4, 5, and immediate factor. Immediate factor means Sarajevo massacre. Here you can say, in English, have you placed the map, Mr. Ankur? Yes. In the beginning? Yes. So there are the total 6 factors we have to mention. And these factors are crystal clear. About the first one factor, it will be a slightly time consuming for me. But be mentally alert, I will help you to grasp the factor number first also. Economic factor is easy, social factor is easy, even cultural factor you are well aware, diplomatic factor 2 to 3 lines you know, and Sarajevo massacre, that is the immediate factor which I have to mention. So all the factors would be crystal clear. So let us start now as the first one factor, as the political factor. So as the political factor you can say, here you can mention the one thing as the political factor, that is, you know, the creation of two military blocks, the creation of two military blocks
in Europe. Two military blocks in Europe. What is this? Here I have to make you clear. Two military blocks. The name of one is Triple Alliance. Triple Alliance, and another is Triple Intent. Triple Intent. My friends, if you want, because whenever you are writing the question, in the question writing, you are not supposed to brief the story, because the story is going to be long and complicated. So obviously you can say कि as you are supposed to write the answer in 150 words and maximum in 250 words. So what about a single one factor? You have to go so deeply, and you have to, you can say, acquire such vast knowledge. But in course of writing, you have to simply mention that up to the beginning of 20th century, in Europe, almost a diplomatic revolution was. The diplomatic revolution pursued, and there was the creation of the two different military blocks, that is Triple Alliance and Triple Intent. Triple Alliance consisted of Germany, Austria and Ottoman Empire. Germany, Austria and Italy. The Triple Alliance, Germany, Austria and Italy. And the Triple Intent consisted of Britain, France and Russia. Triple Intent. So up to the beginning of 20th century, a diplomatic revolution has already taken place in Europe. If you will observe the nature of the diplomatic relation, you will come to realize that basically the two military blocks were the defensive alliance, not offensive alliance. So it hardly matters even if they existed. Means कि there is defensive alliance, means कि there is the three members. अब you can observe 1, 2 and 3. अब in case of the Triple Alliance, you can say Germany, Austria and Italy. In case of Triple Entente, Britain, France and Russia. Defensive alliance means that there was a provision and among themselves, if any fourth party was going to invade any of them, then the rest of the two will defend the first अगेंस्ट द फोर्थ पार्टी. मतलब देखिए, मतलब यहां पर आपको बताया जा रहा है कि ऑफेंसिव अलायंस नहीं है, डिफेंसिव अलायंस है. क्योंकि इसमें अलायंस में यह हुआ कि अगर कोई पार्टी पर किसी, जैसे आप तीन मेंबर्स हो एक ब्लॉक में, अगर कोई फोर्थ मेंबर आप में से किसी एक पर अटैक करता है तो शेष दो एक को हेल्प करेगा फोर्थ के अगेंस्ट में, इन्वेडिंग पार्टी के अगेंस्ट में. ओके, डिफेंसिव. लेकिन अगर आप में से तीन कोई एक किसी फोर्थ पार्टी पर अटैक करता है तो बाकी दो बाउंड नहीं है कि आपके साथ जाए. आपके लिए वो डिफेंड कर सकता है, आपके पक्ष में इन्वेड नहीं करेगा. तो बोथ आर द डिफेंसिव अलायंस. देन व्हाट प्रॉब्लम वाज देयर, बिकॉज ऑलरेडी यू कैन से कि देयर वर टू मिलिट्री ब्लॉक्स. So it created the tremendous psychological pressure on contemporary Europe. As the European powers were divided among the rival military blocks, so even if any tension emerges between the two nations, it quickly takes the form of an all-European. It automatically took the form of an all-European tension, an all-European issue. Although the tension starts between the two nations, but as the European countries were now not neutral, they belong to either this bloc or that bloc. So whenever any, you can say, tension emerges, it took the form of an European tension, an European issue. First factor. Second one factor was that there was the creation of two military blocks, so each military block just tried to make an excellence on the other from the viewpoint of military preparation. So it obviously led toward the blind armed race and military rivalry. So it created tensions further in Europe. मतलब मैंने आपको बताया कि देखो, ठीक है, नुकसान क्या है, ये दोनों तो डिफेंसिव अलायंस है. नुकसान है क्योंकि दोनों
है तो अलायंस डिफेंसिव, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस अलायंस का एक लिमिटेशन यह है कि अब दोनों अलायंस तो मिलिट्री ब्लॉक है, तो अब दोनों चाहते हैं कि हम एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर रहें। तो एक तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इनके बीच आपस में आर्म्ड रेस शुरू हो गया कि भाई मैं इतना वेपन्स बनाऊं, कहते हैं मैं इतना वेपन्स बनाऊं, तो उसे पूरा पब्लिक ओपिनियन है वो पॉल्यूटेड हुआ और टेंशंस हुआ। सेकेंड वन कि अब चूंकि देखो यूरोपियन कंट्री न्यूट्रल नहीं रह गए, वो मिलिट्री ब्लॉक्स में बटे हुए थे, तो जब भी दो कंट्री के बीच टेंशंस हुआ, जो मैं आपको बताऊंगा, टेंशन तो ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच था, मतलब ही नहीं था यूरोपियन पावर्स को इन्वॉल्व होने का। लेकिन चूंकि अब ब्लॉक्स बन चुका था, इसलिए जब टू कंट्री के बीच भी कोई टेंशन होता तो ऑल यूरोपियन शेप ले लेता, ऑल यूरोपियन इश्यू बन जाता। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। अब आपके मन में क्यूरियोसिटी ये हो सकती है, क्योंकि मैं अगर बिस्मार्क का फॉरेन पॉलिसी नहीं बताऊं तो आई थिंक आई विल नॉट डू जस्टिस टू द टॉपिक। सो लेट अस डिस्कस अबाउट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ बिस्मार्क। अब देखो, लिखने में तो आपको इतने से ही काम चल जाएगा, बट आर यू क्यूरियस अबाउट नोइंग कि हाउ डिड मिलिट्री ब्लॉक्स कम इनटू एग्जिस्टेंस? व्हाट वाज द बैकग्राउंड behind the military blocks coming into existence, and how did Bismarck play the diplomatic machination in Europe in creating the bloc? Do you want to know it? If yes, give hint to Mr. Ankur, or if that suffice, I will move further in point number 2. Tell me, and be quick and fast. Yes. Would they want to know? Yes. Okay. You already know unification of Germany and Ottoman Bismarck. Ottoman Bismarck, you know, okay, that is German Chancellor. He was German Chancellor Ottoman Bismarck. Up here you have to know what is the specificity of Bismarck, you know. The specificity of Bismarck was in 1870 he successfully just executed the unification of Germany. After that, between 1870 to 1890, he remained to be the German Chancellor for rest 20 years. Earlier he was the Chancellor of Prussia, you know, and in the status of Prussian Chancellor, he became a mastermind behind the unification of Germany. And after unification of Germany, he remained on the post of German Chancellor for rest of 20 years. So when Bismarck came to power, my students just try to understand this point. So Bismarck was actually, basically, Bismarck was having the complete control on the foreign policy of Germany. And Kaiser and William I, you know, who was at that time the German king, so he was having almost the blind faith in the leadership and in diplomatic acumen of Bismarck. Bismarck was given the free hand by the ruler, by the monarch, William I, in the matter of foreign policy. And just like Jawaharlal Nehru, you can say, Bismarck didn't appoint any foreign minister. He always, being a chancellor or prime minister, he always graced the post of the foreign minister as well, and foreign ministry was just subordinated under the, you can say, institution of chancellor itself, you know. तो मतलब ये था कि बिस्मार्क फॉरेन पॉलिसी का एक एक्सपर्ट था, तो बिस्मार्क का फॉरेन पॉलिसी को विलियम फर्स्ट ने भी छेड़छाड़ नहीं किया। मैंने विलियम फर्स्ट ने एक तरह से ट्रू हैंड उसको दे दिया कि ठीक है आप रन करिए। तो बिस्मार्क के फॉरेन पॉलिसी का एक ही मकसद था कि आइसोलेट फ्रांस इन यूरोपियन पॉलिटिक्स। व्हाई? इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कि बिस्मार्क वाज वरीड अबाउट द फैक्ट कि फ्रांस कुड नेवर फॉरगेट द national humiliation and disgrace which it had come to face in the Battle of Sedan and the Treaty of Frankfurt, because the France was humiliated. So France just tried to retaliate against Germany. So better to make France friendless so that
कि फ्रांस कुड नेवर डेयर टू टेक द रिवेंज, सो इट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव। अब फ्रांस को आइसोलेट करना है, और बिस्मार्क का मानना था कि Germany was now a united nation. It was formidable in size. So Germany needed not any further extension in any area, but the objective of Germany should be simply to maintain its own unity and integrity, and Germany had to remain into its European bounds. मतलब कि उसका कहना यह था कि जर्मनी एक बहुत ही बड़ा और गाइगेंटिक नेशन है, बहुत बड़ा, बहुत लार्जर साइज है। जर्मनी को किसी अब नए रीजन में एक्सपेंड करने की आवश्यकता नहीं है। जर्मनी को सिर्फ अब यही चाहिए कि जर्मनी अपने यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को बचा कर रख ले, यही इसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जर्मनी को यूरोप की सीमा में ही बंद कर रहना चाहिए, यूरोप की बाउंड्री में, उसको एशिया अफ्रीका अन्य कॉन्टिनेंट में नहीं जाना चाहिए, ये बिस्मार्क चाहता था। तो खैर बिस्मार्क ने पहला फ्रांस को आइसोलेट करने के लिए कि उसने पहले सोचा, ऑब्जेक्ट बिस्मार्क वाज क्रिएट you can say an alliance among the three monarchs, and that was the Russian, Austrian and German monarch. Where the point is that कि you know the fact कि Austria, basically Bismarck disgraced Austria. Bismarck had earlier disgraced Austria in the Battle of Sadowa. So why the Austrian monarch should come near to Germany then? Actually, Austria was still a country which was having a German majority. So still Austria and Germany both were, although both were at loggerhead in the Battle of Sadowa, but still you can say Austria and Germany both were having a sense of fellow feeling. तो इसलिए उसने सोचा कि पहले हम जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रशिया, इन तीनों को मिलाकर हम एक अलायंस बनाए और एक ग्रुप बनाए जो थ्री मोनार्क्स का एक ग्रुप होगा। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम क्या आया उसकी, जो पहले उसने 1873 में इसने कोशिश की, तो उसकी कोशिश यही थी, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम यह था कि बाल्कन रीजन तो आपको पीछे बता ही चुका हूं। आप कहोगे भाई आई हैव फॉरगॉटन बाल्कन रीजन, तो बड़ा डिफिकल्टी मुझे हो जाएगी, तो मैं आपको समझा ही नहीं पाऊंगा। बाल्कन रीजन मतलब वही ऑटोमन एम्पायर का जो ईस्ट यूरोपियन रीजन है, वही बाल्कन रीजन है। तो बाल्कन रीजन में रशिया और ऑस्ट्रिया का बहुत ज्यादा राइवलरी था। आप कहोगे राइवलरी क्या है, तो आपको याद है, I have already told you कि Serbia was a Russian disciple, you know. Serbia was a Slav country and Serbia was a follower of Russia, and Russia used to provoke Serbia to start a pan-Slav movement, and pan-Slav movement could not have damaged simply Ottoman Empire but also Habsburg Empire equally. So it created a major rift between Russia and Austria and a major tension between Austria and Serbia. So I have just briefed this story earlier. तो इसलिए क्या है कि रशिया, ऑस्ट्रिया दोनों को जर्मनी और बिस्मार्क जर्मन चांसलर साथ नहीं ले जा सका, और तभी एक घटना हो गई 1877 में। रशिया ट्राई टू पेनेट्रेट ऑटोमन एम्पायर एंड स्नैच टू इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स, बॉस्फोरस एंड डार्डेनल्स I have told, and to move its ship into Black Sea. Russia tried to capture some Ottoman region. So Britain was now restless because Britain was concerned about maintaining balance of power, and Britain was much watchful about the movement of Russia, you know. तो ब्रिटेन इस बात से बहुत नाराज हुआ और रशिया को चैलेंज किया, और ब्रिटेन ने कहा कि एक ऑल यूरोपियन कांग्रेस बैठे और वही ऑल यूरोपियन कांग्रेस डिसाइड करेगी रशिया और ऑटोमन एम्पायर के भविष्य का, बिकॉज ब्रिटेन वाज सो कंसर्न्ड अबाउट मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप कि इट ट्राई टू पुट अ चेक ओवर रशिया, यू नो. सो ही जस्ट ब्रिटेन क्रिएटेड प्रेशर ओवर रशिया टू submit the issue of Balkan and the issue just try to submit the issue between Ottoman Empire and Russian Empire to an all-European Congress. So in 1878, my students, there was the organization of the so-called Berlin Congress. Berlin Congress is the very famous Congress, you know. And this Berlin Congress was presided over by Bismarck. My students, you may recall earlier, whatever the European Congress could have been organized. So European Congress was presided normally by a French monarch.
because at that time the France was the most prestigious nation of Europe at that time in continental Europe, because Britain was more interested, you can say, in overseas trade, you know. So France was at that time the most powerful and prestigious territorial power in Europe. But after the Battle of Sedan, this crown was snatched by Germany. So now Germany and Berlin became the pole of all European politics and diplomacy. So that's why you can say that the Congress was organized and convened at Berlin and Otto von Bismarck presided over it. अब बिस्मार्क को बैठा और बिस्मार्क को पंचायत करना है. Bismarck didn't become a neutral, you can say, he was not a neutral broker, but slightly Bismarck tilted in favor of Britain and slightly Bismarck tilted in favor of Austria at the cost of Russia. तो एट द कॉस्ट ऑफ रशिया बिस्मार्क ने थोड़ा सा टिल्ट ले लिया ऑस्ट्रिया के फेवर में. अब इसका परिणाम हुआ कि 1879 में देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ डुअल अलायंस बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी. मतलब डुअल अलायंस का फॉर्मेशन 1879 में हुआ क्योंकि बर्लिन कांग्रेस में बिस्मार्क ने थोड़ा सा ऑस्ट्रिया या ऑटोमन एम्पायर के थोड़ा सा ऑस्ट्रियन एम्पायर के फेवर में टिल्ट ले लिया और रशिया को नेग्लेक्ट कर दिया. तो इस कारण से क्या हुआ कि 1879 में दोनों के बीच, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच एक डुअल अलायंस बन गया. अब मैं स्टूडेंट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट हियर. अब यू मे आस्क मी ए क्वेश्चन because you are a bit curious कि in what way Germany placated Austria, in what way Germany tilted in favor of Austria. So here I am giving the concrete example. Observe here a map. Where is map, Mr. Ankur? नीचे. Where? How much नीचे? Oh, this one. Yes. अब देखो, this is Austrian Empire, you know. This one not the map. Today's map I am asking. Oh, okay. Ab this is, you know, this is Austrian Empire, you know, and this is Ottoman Empire. ये मैं भी भेज देना इनको, सेंड कर देना. अब my students, here you have to observe. This is Bosnia, and this is Herzegovina. Bosnia and Herzegovina. These were the Slav populated region. And basic problem started from here. What was the basic problem? Basic problem was that Bosnia and Herzegovina was the Slav populated region. And here you can see that was the part of Ottoman Empire. It was the part of Ottoman Empire. And you know, Russia was consciously encouraging Serbia to start a pan-Slav movement in order to provoke Slav to be independent from Ottoman Empire. तो अब स्लाव को भड़का रहा है वो सर्बिया. So in Bosnia and Herzegovina a liberation movement started. Ottoman Empire tried to crush it, but Russia intervened on the behalf of the Slav population. So at this behavior Britain was upset. Anyway, in Berlin Congress now question arises कि what will happen to this Bosnia and Herzegovina now. अब ये था टर्की का रीजन, येलो है, अभी देख रहे हो पिंक हो गया, ये रीजन था. तो बर्लिन कांग्रेस ने क्या किया कि बोस्निया और हर्जेगोविना को ऑटोमन एम्पायर से अलग करके और उसको ऑस्ट्रियन एम्पायर के पैट्रोनेज में रख दिया. मैंने उसके पैट्रोनेज में रख दिया कि ऑटोमन एम्पायर हैब्सबर्ग एम्पायर वुड बी अ पैट्रन टू द स्लाव पॉपुलेशन ऑफ बोस्निया एंड हर्जेगोविना. अब बताइए ये किस तरह का ब्रोकिंग हुई. सो रशिया वाज अपसेट कि why you have placed this region. Either you could have given them the freedom, completely the free nation you might have created in Berlin Congress, or you might have, at least, and the worst of all, you should have placed under the control of same Ottoman Empire, whose part it was. But what type of, you can say, mediation you have done? You have just transferred this region Bosnia and Herzegovina to Habsburg Empire. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा, मैं मानता हूं, मैं हिंदी में बोल देता हूं फिर.
मतलब देखिए, अब ये तो अलग तरह की ब्रोकिंग हो गई ना, अलग तरह की पंचायत हो गई। ये किस तरह का मीडिएशन हुआ? इसका कहना था रशिया का कि भाई बोस्निया हर्जेगोविना स्लाव प्रोप्राइटरी रीजन है, वो ऑटोमन एम्पायर से अलग होना चाहता था, तो या तो आप उसको लिबरेट कर देते या फिर उसको आप ऑटोमन एम्पायर का वो पार्ट रहा था तो ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत ही रहने देते। आपने उसको इंडिपेंडेंट न करके न ऑटोमन एम्पायर के अंतर्गत रहने दिया, आप हैब्सबर्ग एम्पायर को इसको गिफ्ट के तौर पर उसको दे दिया, और हैब्सबर्ग एम्पायर बिना कोई व्यर्थ का बेसलेसली उसका वो पैटर्न बन गया। तो ये था रशिया के डिसकंटेंटमेंट का कारण। और बोस्निया हर्जेगोविना जो मिला इसको हैब्सबर्ग एम्पायर को, तो हैब्सबर्ग एम्पायर खुश हो गया। और हैब्सबर्ग एम्पायर अब चूंकि वहां भी स्लाव पॉपुलेशन था, उसके पास ऑलरेडी स्लाव पॉपुलेशन था, एंड वर्स्ट ऑफ ऑल दैट विल बी द इमीडिएट कॉज बिहाइंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो कीप इन योर माइंड कि इन 1908, अर्लियर एक्चुअली इन 1878, in 1878 you can say कि बोस्निया एंड हर्जेगोविना were given under the control of this Habsburg Empire. This Habsburg Empire, just like an Habsburg Empire, was just like a patron, nothing more than that. But in 1908, 1908, this Habsburg Empire means कि Austria Habsburg are the same, annexed the two regions, and now annexed the two regions, these two regions, and it became the part of Habsburg Empire. So Russia was upset and Serbia was excessively disturbed. So Serbia consciously opposed the move of this Habsburg Empire, and Serbia consciously and secretly encouraged there some terrorist organization to be formed. At the behest of Serbia, some terrorist organizations were formed in Bosnia and Herzegovina, and the capital of Bosnia was Sarajevo. There was a terrorist organization, its name was Black Hand, and Serbian, you can say, and Habsburg prince, the prince from Austria, Austrian prince or Habsburg prince, Archduke Ferdinand, just went to visit at the capital of Bosnia, Sarajevo, in June 1914, and a fateful day, this terrorist organization of Black Hand and some terrorists made an attempt on his life and assassinated him. So this assassination resulted immediately into the First World War. तो ये देखो, यही से बर्लिन कांग्रेस की ही जड़ इसमें थी। बर्लिन कांग्रेस ने ही ये प्रॉब्लम को यहाँ पर क्रिएट किया था। सो बर्लिन कांग्रेस वाज हियर, यू कैन से, मेजर प्रॉब्लम बोस्निया एंड हर्जेगोविना। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा हिंट करना कुछ समझ में आया, बिकॉज आई हैव स्पोकन इन इंग्लिश हिंदी बोथ। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो। Are you clear or any difficulty? Yes. Are they clear? Actually, my students, in writing you will not need that, but it's my own perception if the background and events are not clear, so we don't develop a sense of confidence. So in order to inculcate a sense of confidence, to acquire this knowledge and to acquire this information is इसेंशियल। नहीं तो कॉजेज में तो मैंने आपको पहला जो लिखवाया है, पहला पॉइंट पॉलिटिकल, दैट एनफ। अब नाउ स्टोरी मूव फर्दर। अब व्हाट इज द स्टोरी, इन व्हाट वे, सो आई हैव टू इन्फॉर्म यू। सो in this way you can say कि dual alliance was formed between Austria and Germany. Now Bismarck was planning to bring Italy into this bloc, but Italy, there was one problem with Italy. Italy was equally divided between France and Germany. मतलब Italy was having a sense of affection for France equally as for Germany. So Italy was not ready to form any alliance with Germany against France. So अब now my students, Bismarck was a very wily politician, so he tried to discover what is the bone of contention between France and Italy. How can you wage a cleavage between the two?
and then the France or Italy would automatically come into my camp. मतलब अब उसने सोचना शुरू किया कि यार इटली तो अपने कैंप में आएगा नहीं, तो पता करूं कि इटली और फ्रांस में डिफरेंसेस का क्या पॉइंट हो सकता है जिसको क्लिक करके हम इटली को अपने कैंप में ले आए. तो ही केम टू रियलाइज दैट कि इन फैक्ट Italy and France both are having their greedy glance over, and both were having their glance Italy, there was a region in Africa, that is Tunisia. In northern Africa you might have observed that Tunisia. So Tunisia was the part of Tunisia was under the control of Italy, but France was having the greedy glance over Tunisia, you know, because France was already, you can say, in the nearby region. So France was having the greedy glance over Tunisia. But France was under the misconception कि if we are going to treat the region of Tunisia, so Germany might appear as a helper to Italy, or Germany might, you can say, jump into the whole conflict on the behalf of Italy. So for that fear, France didn't dare to encroach the region of Tunisia. So Bismarck was then restless, and Bismarck just called the French ambassador on dinner in the night, and in the dinner he secretly hinted this ambassador कि if France would capture Tunisia or France would encroach Tunisia, Germany is not having any objection against it. So it was enough hint to France. France took action on Tunisia in 1881 and captured Tunisia forcefully from Italy. So now the Italian nationalism was gripped. And Italian nationalism was gripped, so it gave opportunity to Otto von Bismarck, and Bismarck, you know, suddenly brought Italy into its camp and just told Italy it is just a homecoming, come into my camp, and persuaded Italy to join this camp. So in 1882, you know, in 1882, this Triple Alliance was converted into Triple Entente. Double Alliance was converted into Triple Alliance. So now in 1882 there was the formation of Triple Alliance. जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अब ये सोचने लगा कि भाई इटली और फ्रांस के बीच किस तरह से टेंशन्स पैदा करूं ताकि इटली हमारे कैंप में आए. तो उसको पता चला कि ट्यूनिशिया एक ऐसा रीजन है नॉर्दर्न अफ्रीका में जो इटली के कंट्रोल में, और फ्रांस भी उसको कैप्चर करना चाहता है. लेकिन फ्रांस को डर यह है, गलतफहमी कहिए, कि अगर मैं उसमें इनक्रॉच करूंगा, उसका कहना है कि अगर मैं उसमें इनक्रॉच करूंगा तो कहीं ऐसा न हो कि जर्मनी इटली के साइड से आ जाए. तो फ्रांस इस डर से नहीं कर रहा. तो इसने बड़ी चालाकी से फ्रेंच एम्बेसडर को डिनर पर बुलाया और कहा कि अगर आप ट्यूनिशिया पर कब्जा कर लोगे तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं. अब इतना तो हिंट काफी था. फ्रांस ने 1881 में ट्यूनिशिया पर कब्जा कर लिया तो इटली का नेशनलिज्म ग्रिप्ड हुआ, इटली बहुत परेशान हुआ. तो इसने तुरंत इटली को अपने कैंप में ला दिया और 1882 में इसका फॉर्मेशन हो गया. तो बिस्मार्क ने तो अपना काम कर दिया. बट नाउ माय फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली फॉर बिस्मार्क और अनफॉर्चुनेटली फॉर जर्मनी, यू नो, कि विलियम फर्स्ट द किंग died and his successor was William Caesar or William II. He was not having the confidence in Bismarckian foreign policy, and he started to reverse Bismarckian foreign policy. Bismarck has taken very precautionary measure. What was the precautionary measure? The Bismarck was leading Germany, and Bismarck already knew the fact that Britain was having Britain was the global power, you know. So Bismarck was not in a mood to displease Britain. And Bismarck was well aware of the fact that the British are having simply two weaknesses. If you are not going to touch their weak point, they will never antagonize you. The first weakness is that the Britain would never tolerate the challenge to its naval power supremacy. If you are going to strengthen your naval power, and in this way you have given a challenge to the supremacy of the British naval power, so the British would never tolerate this. They would retaliate. So that's why Bismarck strengthened its army, ground army, but Bismarck never tried to strengthen its naval force. Second one, Bismarck already knew the fact that Germany had to remain into its European bound. It should not move to other continent for searching colonies, because it will undermine its own unity and integrity. मतलब बिस्मार्क को पता था कि देखो, ब्रिटेन
का दो वीक पॉइंट है, अगर उस दो वीक पॉइंट को तुम टच कर दोगे तब वो पलट के काट लेगा। क्या है वीक पॉइंट? तो एक है कि उसकी जो नेवल पावर है, जो नौसैनिक क्षमता है, उसको अगर चैलेंज करोगे तो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो उसने क्या किया कि अपने ग्राउंड आर्मी को बढ़ाया और उसके नेवल फोर्स को चैलेंज नहीं किया, नेवल फोर्स को चैलेंज नहीं किया। और दूसरा, बिस्मार्क ने यह भी सावधानी बरती थी कि हमें एशियन अफ्रीकन रीजन में नहीं जाना है, हमको बेसिकली यूरोपियन बाउंड में रहना है। विलियम कैसर ने दोनों को रिवर्स कर दिया। एक तो उसने ही स्टार्टेड नेवल प्रिपरेशन एंड स्टार्टेड टू चैलेंज द ब्रिटिश सुप्रीमेसी, सो ब्रिटेन वाज नाउ अपसेट। एंड सेकेंड वन, it started its colonial expansion in Asia and Africa, and it gave a counter slogan to Britain: we also want land under the sea. हमें भी सूरज के नीचे जमीन चाहिए। अब Britain was upset, and what happened? The Russia was already, you can say, sidelined after this Bosnia and Herzegovina episode, you know. So Russia, after having been sidelined, and particularly Bismarck was not in a mood to sideline Russia. It tried to engage Russia even after this incident of Berlin Congress. But William Kessler was having the damn care for Russia. So Russia came near to France, and France no more remained to be isolated. And in 1894, there was the formation of double intent between फ्रांस एंड रशिया। मतलब कि अब फ्रांस अलग थलग नहीं रह गया, रशिया ने फ्रांस के साथ 1894 में दोनों मिलकर एक डबल इंटेंट बना लिया। अब ब्रिटेन, एक्चुअली जर्मनी स्टार्टेड टू चैलेंज ब्रिटेन, सो ब्रिटेन रिटर्न टू कॉन्टिनेंटल पॉलिटिक्स नाउ, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि ब्रिटेन वाज ऑलवेज बिजी इन इट्स ओवरसीज एम्पायर. It was not concerned about European question for most of the time, and Britain was not taking interest into the continental politics in Europe. And normally Britain believed that there should be one territorial power in Europe, and that should maintain the balance of power, and Britain should be friendly to it. So earlier the France and Louis Napoleon III had played the role, and this time Bismarck was playing the role. But now Germany started to give a challenge to Britain, so Britain once again returned to continental politics and decided to maintain balance of power now against Germany, no, not against Russia. Earlier the Britain was much up and doing for maintaining balance of power against Russia, but Britain up now was no more inimical to Russia. Britain was not having such a deep hatred for Russia now. It was up now opposed to Britain, opposed to Germany. तो ब्रिटेन जब कंटेनर पॉलिटिक्स में आया तो उसने देखा कि यार हम तो अकेले रह गए, एक ट्रिपल अलायंस बन गया, एक ट्रिपल इंटेंट बन गया। तो ब्रिटेन ने 1904 में ब्रिटेन फ्रांस के साथ मिलकर ब्रिटेन एंड फ्रांस फॉर्म्ड अनदर डबल इंटेंट। ब्रिटेन एंड फ्रांस बोथ टुगेदर जस्ट फॉर्म्ड अनदर डबल इंटेंट। तो इस तरह से उधर दो डबल इंटेंट बन गया, क्योंकि ब्रिटेन अभी भी हेजिटेट कर रहा था रशिया के साथ। लेकिन 1987 तक रशिया के साथ उसका सारा टेंशन रिमूव हो गया। जब रशिया जापान के हाथों डिफीट हुआ 1905 में, तो 1907 में ये दोनों इंटेंट मिल गए और ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया ऑल कंबाइंड टुगेदर फॉर्म ट्रिपल इंटेंट। सो इन दिस वे, in the beginning of, up to the beginning of 20th century, there was the total diplomatic revolution in Europe. अब मिस्टर अंकुर आस्क माय स्टूडेंट्स कि ये तो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक थी, मैं पहले अवॉइड करना चाहा। मैंने सोचा राइटिंग में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिस्मार्क के फॉरेन पॉलिसी का समझना चाहिए, और जो काउंटर ब्लॉक बना है, कैसे ब्रिटेन अपसेट हुआ है जर्मनी से, तभी आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कंटेक्स्ट समझ पाते। Actually, I have decided earlier to ignore it, but it was not possible. Otherwise, you will not understand the basic diplomacy behind the First World War. So that's why I have made you clear. Mr. Ankur, ask my students, are they clear? What?
Are they clear? Yes. कुछ query. Yes. Be fast. IOC पूछे why German Chancellor support Austria in Berlin Congress? Because Germany was having a natural inclination for Austria. Austria was having a German majority region, and Russia was having the Slav population. So Germans are having a natural, you can say, hatred for, you can say, Slav. But Germans were not at that time having respectivity for or the Slav, and they developed a sense of fellow feeling. IOC, they developed a sense of fellow feeling with Germans, and Austria was a German majority region. It was the cause. Okay. Ab now, second one point. Our second one point is the economic factor. So as the economic factor, you have to mention about what? You have to mention about the, you can say, imperialistic expansion, because Industrial Revolution created a need for the market. A need for the market led towards the economic expansion. So, imperialistic expansion. So, imperialistic expansion resulted into the collision among different powers from time to time in other continents, and created the situation of tensions even in Europe. Although there is one view, after all, this imperialism did some sort of ventilation of tensions of European powers, because European powers were engaged in the vast region of Asia and Africa, so they could not pay attention properly to Europe, and their power and their tensions were vented in other continents, so situation of war was averted. But just up to the beginning of 20th century, almost whole of Asia and Africa were divided among European powers. So European powers once again started to return in continental politics, and that phenomena led to the First World War. मतलब देखो, अब माना जाता है कि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो मार्केट की आवश्यकता हुई, तो मार्केट की जरूरत के लिए उनको इंपीरियलिस्ट एक्सपेंशन यानी साम्राज्यवादी प्रसार किया। लेकिन साम्राज्यवादी प्रसार के कारण अदर कॉन्टिनेंट में टेंशन तो होते थे, लेकिन उसके कारण उनका जो कहीं ना कहीं टेंशन रिलीज भी होता था, वो वेंट करते थे। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई कॉन्टिनेंट में वॉर हो रहा हो, टेंशन हो रहा होता था, तो यूरोप बचा हुआ था। लेकिन 20th सेंचुरी के बिगिनिंग तक एशिया अफ्रीका कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो अब वो यूरोपियन पॉलिटिक्स में आकर लौटे, और जब लौटे तो उनका कोलाइजन हुआ बाल्कन रीजन में, बाकी रीजन में, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो इकोनॉमिक फैक्टर है। अब नेक्स्ट वन फैक्टर इज सोशल फैक्टर। About the social factor, I have already mentioned one factor you might have read, social imperialism. What is social imperialism? Social imperialism is that almost every capitalist country was facing a threat of the Marxist revolution, because there was the internal contradiction within their society, and as the result of industrial revolution, so they were facing the challenge of Marxist revolution. So in order to divert the attention of their own people, and in order to export the tensions from within to outside, they consciously followed the aggressive foreign policy, an imperialistic expansion. So that resulted into the collision among the different powers. आप समझ गए होंगे, क्योंकि वो सारे कंट्री को फेस करना पड़ रहा था मार्क्सिज्म का चैलेंज, एंड मार्क्सिज्म का रिजल्ट क्या होता? टेंशंस एंड वॉर में होता। तो अपने जो लोग हैं उनका जो अटेंशन है वो इंटरनल से एक्सटर्नल करना चाहते थे, और उसी में उन्होंने इंपीरियलिस्ट एक्सपेंशन शुरू किया कि ताकि बाहरी फ्रंट पर लोगों का ध्यान जाए, और एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट किया, जिस कारण से टेंशंस एंड वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन आ गया। एंड आफ्टर सोशल फैक्टर देन यू कैन मेंशन व्हिच वन फैक्टर? दैट इज कल्चरल फैक्टर। अब व्हाट इज कल्चरल फैक्टर? कल्चरल फैक्टर ये है कि बेसिकली आइडियोलॉजी, द रोल ऑफ आइडियोलॉजी, और आइडियोलॉजिकल फैक्टर ऑल्सो कल्चरल फैक्टर, इवन यू कैन यूज द आइडियोलॉजिकल फैक्टर। A group of thinkers at that time, a large number of thinkers in 19th century, you might have heard about Hegel, you have Charles Darwin, or social Darwinism you have heard about, and Hegel you can say.
So, etc. You can say that these thinkers, so basically Hegel has given the statement that Hegel just glorified the nation कि nation is just like a march of God on the earth. Nation is just a march of God on earth, and every citizen, every subject should try to sacrifice their life on the altar of the nation. तो ऐसा नेशन को ग्लोरीफाई किया कि नेशन पर सभी अपनी जान को अर्पित करने के लिए तैयार हो जाते थे. दिस वॉज द केस. एंड सोशल डार्विनिज्म जो आई हैव टोल्ड यू कि इनफैक्ट चार्ल्स डार्विन हैज गिवन द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, and it was further developed by Herbert Spencer in the form of social Darwinism. So social Darwinism has given the emphasis of survival of the fittest. So social Darwinism just try to, you can say, establish that war and conflict was always beneficial for society, because war and conflict is giving opportunity to powerful to move further, to talented to progress further. So war and, you can say, conflict is always beneficial for society and a nation. So in this way, the glorification of war also resulted into the invitation of the First World War. मतलब अब सोशल डार्विनिज्म यह कह रहा है कि जो वॉर है और कन्फ्लिक्ट है उससे कोई नेशन कमजोर नहीं होता और ताकतवर होता है, उस नेशन की प्रतिष्ठा बढ़ती है. दिस इज अ मैटर ऑफ ग्लोरी फॉर अ नेशन. तो इस तरह से उसने सोशल डार्विनिज्म ने इसको अपने ढंग से सपोर्ट किया. अब हम कहते हैं डिप्लोमेटिक फैक्टर. डिप्लोमेटिक फैक्टर, अब देखो डिप्लोमेटिक फैक्टर में क्या है कि ऑलरेडी यू कैन से देयर टू मिलिट्री ब्लॉक्स वर वर्किंग. देयर वर टू मिलिट्री ब्लॉक्स एंड द वर्स्ट सिचुएशन वाज दैट कि देयर वाज ऑलमोस्ट कंप्लीट डिप्लोमेटिक breakdown in Europe. Two military blocks were working, and when there was the moment of tension. So in the moment of tension, you can say if there could have been a constructive diplomacy and the choice of constructive diplomacy at that time, this tension might have been averted, because so far in Sarajevo massacre, there was the assassination of a king. But assassination of a king was not a new thing in Europe. In 1900, the king of Italy, and in 1909, the king of Portugal were also assassinated. But in spite of that assassination, there was no outbreak of war. But why did there was the outbreak of the First World War on Sarajevo massacre, on the issue of Sarajevo massacre? That became the immediate factor. It is due to the fact that there was a complete breakdown of diplomatic machinery. So it was the one factor. मतलब जो कूटनीतिक प्रक्रिया है वो अवरुद्ध हो गई थी, और इस कारण से जो वॉर और टेंशन है उसका कोई निजात नहीं हो पाया. अब देखिए, अब व्हाट इज सेराजेवो मैसेकर इमीडिएट फैक्टर. सो आई हैव टू मेंशन सेराजेवो. Sarajevo massacre. So my friends, actually Sarajevo massacre is कि Sarajevo was the capital of Bosnia, and Bosnia and Herzegovina were already annexed by who? The Austrian Empire or Habsburg Empire. And this Archduke Ferdinand was a Austrian prince, So this Austrian prince was likely to visit the capital of Bosnia, Sarajevo, with his wife. In the meantime, there was a terrorist organization, a number of terrorist organizations were working, for example, you can say at the behest of Pakistan. The terrorist organizations are functioning in Kashmir. So likewise, at the behest of Serbia, some terrorist organizations were working in the Bosnia and Herzegovina. So in Sarajevo, he went to visit the place. So he was assassinated along with his wife. So actually, this was this organization Black Hand, and it was supposed
कि behind this assassination Serbia is having its hand. Whether Serbia is having its clear-cut hand or not, this is not conclusive. We are not having any conclusive evidence in this regard, but it is clear that Austrian Empire tried to make benefit from this situation, and Habsburg Empire came to realize that Serbia used to be an arch enemy. Serbia is an arch enemy, and had remained to be an arch enemy to Austrian Empire, and Austrian Empire has got an opportunity to punish Serbia on the pretext of assassinating the Prince Archduke Ferdinand. So it is the opportunity for Austrian Empire. So that's why Austria tried to benefit from the situation, particularly for the fact that Germany gave unconditional support to Serbia on the issue. Germany gave unconditional support to Austria against Serbia on the issue. Although Austria was likely to invade Serbia, and so Germany was not bound through treaty because it was a defensive alliance, not an offensive alliance. But still it gave an unconditional support to Serbia. मतलब आप लोग समझ पा रहे हो ना, मतलब हुआ ऐसा कि सर्बिया में तो चलो सर्बिया का हाथ उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भड़काने में हुआ ना, जो बोस्निया की कैपिटल सेराजेवो में थी, लेकिन उसको ऑस्ट्रियन एम्पायर ने सोचा कि चलो एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी है, इसका हम फायदा उठा लेते हैं, और विशेषकर जर्मनी ने उसको अनकंडीशनल सपोर्ट दे दिया सर्बिया के अगेंस्ट में। आप समझ सकते हो कि भाई ये तो डिफेंसिव अलायंस था, और ऑस्ट्रिया के साथ ऑस्ट्रिया जब इन्वेड करने जा रहा था सर्बिया पर, तब तो बंधा हुआ नहीं था इस ट्रीटी में, लेकिन उसने दे दिया। तो ऑस्ट्रिया हैज गिवन एन अल्टीमेटम टू सर्बिया कि प्रेजेंट द कल्प्रिट, अलाउ माई इंटेलिजेंस एजेंसी टू विजिट योर कंट्री टू फाइंड आउट द कल्प्रिट एंड सीक पार्डन फ्रॉम अस एंड गिव कंपनसेशन। अब इतने सारे कंडीशंस थोप दिए कि अब सर्बिया का तो बॉस ही रूस है। आज तक तो रशिया के ही प्रोवोकेशन पर उसने किया था। सो सर्बिया स्टार्टेड लुक टुवर्ड्स रशिया कि व्हाट इज बॉस, व्हाट्स योर ऑर्डर, आई एम नाउ इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, विल यू हेल्प अस और नॉट। अब रशिया की मजबूरी हो गई कि बाल्कन रीजन में रशिया की क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन हो गई। अगर रशिया सर्बिया को हेल्प नहीं करता तो फिर बाल्कन रीजन में रशिया पर कोई भरोसा नहीं करता, उसको लगता कि भाई सर्बिया को तो इसने फंसा दिया। सो रशिया वॉज नॉट बाउंड टू गिव सपोर्ट टू सर्बिया थ्रू एनी ट्रीटी, देयर वॉज नो ट्रीटी बिटवीन सर्बिया एंड रशिया, बट रशिया स्टूड बाय सर्बिया सियरली फॉर सेविंग इट्स एंड protecting its own credibility in Balkan region. Then Britain was engaged. Then Germany was engaged with Austria. Okay. And Russia was engaged with Serbia. What about France? So France was already Russian and British alliance, So France found a God-sent opportunity to take revenge against Germany. So France gave unconditional support to Russia. Russia gave support to Serbia and France gave support to Russia. Britain was alone. Italy didn't participate initially. Italy told that I am bound with you with a defensive treaty with Germany. Defensive treaty, but as you country, and you are going to offend and invade some other country, so I am not standing by you. So Italy remained to be outside. But now all, you can say, hope was on the head of Britain, and you can say all are looking towards Britain, what would be the British gesture. But British didn't do anything seriously for averting the war, averting the condition of war. So some critics are even blaming the British if other countries invited the war through commission, Britain did it through omission. मतलब कि बाकी देशों ने जहां कुछ करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कंडीशन को लाया, तो ब्रिटेन ने कुछ ना करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंडीशन को ला दिया, and finally you can say कि on 28th July
1914, Austria invaded Serbia. So Russia invaded Austria and Germany, you can say, declared war against Russia. So in this way, and France declared war against Germany, and Britain was at that time initially British defense minister, British foreign minister, Lord Grey, in the evening, and in the evening you can say he was sitting in his foreign external affairs department in the evening, and he was just gazing outside of his window and looking the glooming sky. Now light has gone from the sky of Europe, and I am worried it will never return during our lifetime again. तो ब्रिटेन शुरू में कुछ नहीं करेंगे. ब्रिटेन ने एक कंडीशन रखी कि अगर जर्मनी बेल्जियम को अटैक करेगा तो हम इस वॉर में आ जाएंगे, और जर्मनी ने वही किया, बेल्जियम पर अटैक कर दिया, और बेल्जियम को ब्रिटेन ने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था क्योंकि इंग्लिश चैनल के बगल में था. सो ब्रिटेन declared that if Germany was going to invade Belgium, then I will jump into the war. And finally you can say if Germany invaded Belgium, so even Britain jumped into the war. And in this way, the First World War started. Then now I have to discuss about the impact of the war. Today it could not be finished, my students. And any question? Are you clear or not? Yes or not? Yes. Okay, clear? Homework. My students, now I'm giving the homework. And one more thing, tomorrow I will not attend your class due to my, you can say, some personal work. So I will just attend your class the day after tomorrow. अब मैं समझ रहा हूँ कि क्योंकि टाइम कम मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ जितना जल्दी हो सके. तो tomorrow I will not, लेकिन tomorrow I'll send you the study material. You will have the extra time for a study. So go through the study and make the constructive use of tomorrow. Question, just write the question. First World War was the product of political, economic, social, ideological, diplomatic, all factors comment. अब कहो इस क्वेश्चन तो स्ट्रेट है, क्वेश्चन स्ट्रेट है, लेकिन आपको 2 लाइंस में सारे फैक्टर्स के बारे में लिखना है. दैट इज ए चैलेंज कि हाउ कैन यू राइट द आंसर प्रिसाइजली इन 150 वर्ड्स. That is the challenge. Tomorrow I will send you the study material. Tomorrow I will not attend your class. I will attend your class the day after tomorrow. Tomorrow पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस का पार्ट 4 में तुम आ गए तो पार्ट 4 में ही तुम्हारा सिलेबस नॉर्मली, पार्ट 4 में नहीं, पार्ट 5 में तुम्हारा सिलेबस एंड हो जाएगा. ओके, आई एम स्टॉपिंग. थैंक यू वेरी मच.